So I hope you guys have revised those topics. So we will do core products in Azure. Huh? What? Core products in Azure. Which products? Sorry. Core. Huh. We were doing that, right? So we had to containers तक हुआ था, right? Last slide. So container, I explained you what is a container, right? So can anybody tell me what is a container? It is an application code. Application code. It is used for building an application code. Container storage के लिए use होता है ना? For structure building and for storage of data. Who will tell me what is container? Rufi, can you tell me what is container? How container works? Rufi? Yes, sir. Yeah, tell me what is a container? Sir, it is used to manage applications in the cloud. Manage applications in the cloud. वो तो last time भी आपने वही बोला था, लेकिन I had to explain you what is a container actually. हाँ, Minal, you tell me what is a container? The container is the host operating system in which there is no requirement of a separate operating system. It only has applications in the container. Yeah, normally virtual machine, if you make a virtual machine, it has got its own operating system and it has got a virtual machine, right? Yes. दोनों चीज होते हैं, right? Yes. But container में क्या होता है कि operating system नहीं होता है. There is no operating system. It's only container. Container contains only app settings. So that's why you can start and stop faster. Okay. Start and stop faster. You can relocate anywhere. It can work on any environment because whatever dependency, whatever it needs, everything is contained in that. There is no dependency whatsoever, right? So that is the beauty of containers, right? Yes. So we finished with the compute services. Now we go to storage. We study about the storage in cloud, Azure cloud. So are you guys ready? Yes. Sir. Sir, we have done compute. We have not done backup, storage, and network, right? We have done network also. Yeah, network and Storage and backup. all right. Now we have finished with the network products and the compute
right? Now we're looking at storage. What are the storage options in Azure, right? So normally when we talk about storage, then what happens is storage means it's only the storage which is there in your laptop, in your desktop. That is a storage, right? Yes, sir. Just 1 minute, sir. Hmm. Somebody knocked the door. तो हम हमेशा सोचते हैं कि स्टोरेज वही मतलब नॉर्मल हमारा वो रहता है ना कि जो लैपटॉप में आपका हार्ड डिस्क है, इंटरनल हार्ड डिस्क या डेस्कटॉप पे इंटरनल हार्ड डिस्क, दैट इज अ स्टोरेज, राइट? सो दैट इज कॉल्ड डिस्क अटैच स्टोरेज, दैट इज डिस्क अटैच स्टोरेज, राइट? ऑलराइट, मीनल, आर यू रेडी? Rufi, you are able to hear me? Yes, sir. But nowadays, Sorry, sir. Hmm, no problem. So our idea about, I'll just repeat, our idea about storage is the disk attached storage, the storage which is there in your laptop, the storage which is there in the desktop. Okay, so that is the storage. But the storage thing has changed now. Storage is also like uh, something to do with the storage you buy nowadays. Your compute is separate and storage separate. It's the external thing. You have compute, in this compute, and we have a storage apart from that. Okay, so compute and storage, these are two different things. Getting me? So स्टोरेज अलग से लेना पड़ता है. मतलब वो सर हमारे जो लैपटॉप में वो डिस्क होते हैं वैसा, एक सी डिस्क तो कंप्यूट हो गया, उसके अलावा ई और डी जो आते हैं वो नहीं 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 वो नहीं, वो भी हार्ड डिस्क, वो इंटरनली है, दैट इज इंटरनल स्टोरेज. हाँ, दैट इज इंटरनल स्टोरेज. एक्सटर्नल स्टोरेज लाइक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपने लगाया, वो एक्सटर्नल स्टोरेज हो गया, राइट? बट आजकल वो स्टोरेज फास्ट हो गए, तो फिर आपको इंटरनल इंटरनल स्टोरेज ऑलवेज द फास्टेस्ट, बट उसमें इंटरनल स्टोरेज में रिलायबिलिटी का इशू आ जाएगा, कुछ डेटा करप्ट हो गया तो फिर देन यू विल नॉट गेट अ बैकअप ऑफ इट. तो इसलिए स्टोरेज एक अलग से सिस्टम बना है स्टोरेज का. स्टोरेज का कुछ अलग ही बनाया गया, राइट? तो दैट इज अ थिंग. अलग से उसको बोलते हैं ना, एक सिस्टम बनाया गया जहाँ पर हमको अलग अलग टाइप की फैसिलिटी मिलेगी. ओके, सो वुड यू लाइक टू हैव दैट काइंड ऑफ स्टोरेज? Internal storage has limitations, it has got problems, issues, so that's why we go for other type of storages. Clear now? Yes, Meenal and Rufi, clear? Yes, sir. तो अभी एक ये है कि Azure files करके है. So Azure files, take a snip of this. Let's talk about this Azure files. हाँ, तो Azure files क्या होता है? Let's understand that. So if you have worked in the offices, in offices we have something called as shared drives. Yes, Like sir. you have server, and on the server some data is shared, and that shared data you can access from anywhere. Yes. So normally And it is, multiple people can access it at the same time. huh? Multiple people can access. Multiple people can access, yes. So that shared storage, multiple people can access.
from various places. All right. So we have a shared storage. Hmm? Just a minute. Kindly give me 1 minute, please. Yeah, sorry, there was some visitors, so I got little. Hello, Yes, sir. Rufi, are you there? Yes, sir. So in offices, you will see some shared folders are there. There is server and there is some shared folders there, right? And you can access those shared folders. And mostly the applications which you write, no, mostly those applications can connect to those shared folders, and it can it can take it from there, the shared folders, right? Sir, these are also So network accessible via. applications.
I have a Sorry. question, sir. These Azure files are also accessible via, if we are connected via VPN, as we No, are wait. Let on. me finish. Let me finish. Let me first understand the background which I'm creating. So normally the legacy, the applications which were there before the cloud was really invented. So what was the scene? There were network applications, but the data was accessible from the what do you say uh, from the network servers in form of shares. Even the application used to access the data through that. Okay, through the shares, right? So now those applications, if they are moved on the cloud, if you want to transition to cloud, then what will happen? They will look for servers again. But Azure Files is a feature which will give you that kind of facility. It will make you feel as if even though the network share is on cloud, you will feel as if it is locally available. You're still in the network. Are you getting me? So those legacy, the old applications which were working on office shares, network shares, now those applications become portable in cloud also. Getting now? Hello? Yes, So it becomes portable to cloud as well, right? So yes, this is how it works actually. And once you take this Azure Files storage, then it will be there in your laptop as a storage. You know, you can as another drive, like you have C drive, D drive. You have another drive called E drive, for example. So if you store anything on the E drive, actually it will go to the Azure storage. Like that it will be. Getting clear now? sir, you said E drive, right? Any drive, you can assign D any drive drive, letter to E the drive, yeah. any drive letter you can assign to the storage. You can assign just any drive letter to the storage. Okay, so it is like a file share which is accessible on the corporate office servers. So as you access the file shares on the office servers, same way you can access. And it's using something called a SMB protocol. So many network applications work on file shares which are located on local server, right? With Azure File Storage, we can move such network application easily to the cloud. That's what I told you, right? So we can move it to the cloud, easily to the cloud. All right, clear? Yes. अभी पूछो कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछो अभी. Yes, sir. I wanted to ask that these Azure files, which are in the cloud storage, we can use them even if somebody is connected via VPN. Because if we are working from different VPN की locations जरूरत and नहीं ना. It just need internet. Once you're taken that, just you need to connect to that storage using the okay, credentials through internet. You don't need VPN for that. okay, It will connect through browser. It will connect through your computer. Okay. We don't need VPN. You just need the okay, credentials. okay, So within using that credentials, you connect to that storage, and then you can access it locally. okay, sir. You will not even feel that it is in the cloud. You will feel that it's just a share which is on the local area network, somewhere in the local area network. That's what you will feel. That kind of Okay. feeling you will get. Getting now? Yes, sir. Hmm.
Then we have something called Azure blobs. Okay. Now for different type of data, you have different storages. Now, first of all, you can note down there are three types of data. One is unstructured data. Unstructured data means your files, which is there in your hard disk. Right now, this three types of data. Sir, you told us last time. I've already told, right? So Yes, unstructured data sir. is your files. Yes, sir. Structured, Structured is your unstructured. Uh, structured क्या होता है? Structure is what? yes, sir. I will tell. What is Uh, structured data? 1 minute, sir, I will tell you. Structured data. Hmm. Structured data it is like SQL. Okay. Yeah, SQL is your structured data, right? Structured data. Yes, sir. Then semi-structured data, and then unstructured data. So key values are our semi-structured data, and pictures, images, files are our unstructured data. Hmm. So structured data, semi-structured data, and unstructured. Unstructured. Unstructured data is your files. It can be document files, it can be images, it can be videos. Okay, so So structured. semi-structure, once again, after Wait a this. minute, wait a minute, wait a minute. Let me speak, my dear. So unstructured data is files. It can be document files, it can be image files, it can be video files. Okay, so that is your uh, unstructured data. Okay, then structured data is your SQL data. SQL data is tabular data. जैसे आपने Excel में data कैसा रहता है tables में वैसा, that is SQL data. Is a structured data. It has got a structure. It has got columns, right? The data has got some structure. That is structured data. Hmm? And semi-structured is key value pairs. That means it will have a key, like name is the key and value is say Irfan. Okay, phone number is the key and actual phone number is the value, like that. So that is your semi-structured data. So you have structured data and you have semi-structured data like this. So Azure Blobs is used for storing the unstructured data. So based on that, the price will be different, right? See, we have to use the right kind of storage to store the right kind of data. Are you getting me? Right kind of storage to store right kind of data, and the cost will be according to that. So cloud is all about all facilities are there, but you will use things which will be cheaper for you, right? Cost wise थोड़ा सस्ता होना चाहिए. That is the benefit of that. ये हम चाहते हैं इसमें. समझे? Clear now? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. तो अगर आपको कोई फाइल स्टोर करना है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करना है, तो Azure Blobs is the ideal choice. ये आइडियल है कि हाँ इस पे स्टोर कर सकते हैं हम. ठीक है ना? So this is suitable for big data analysis, जहाँ पर बहुत सारा डेटा है, तो उसके लिए भी suitable है blobs. Streaming data means your video data, your IoT data, Internet of Things. Nowadays we have something called as IoT, Internet of Things. So it will just uh, send the notifications every now and then. Internet of Things. What is IoT, by the way? You know what is IoT? IUD, D as in Delta. I for India, O for Orange, T for Things.
Internet of IoT, Things. Internet of Things. IoT means what? Nowadays the devices they also communicate using they have IP addresses and they communicate. The device can be even your like one of my customers now, they are into building automation, industry automation, home automation. तो आपका AC हो या आपका lights हो या door हो, सब में internet होता है. They can talk, they can send information. Getting me? So that is called as Internet of Things. अगर कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई बैंड हो सकते हैं. The band can send the data also, like patients का ना पूरा वो measure करके उसका जो भी बीपी है, शुगर है, जो भी है measure करके वो भेजेगा. तो जैसा हमारा मोबाइल नेटवर्क है, जैसे हम एसएमएस कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं, वैसे ये डिवाइसेस भी बात कर रहे हैं आज की डेट में. गेटिंग माय पॉइंट? They are also generating data. That is called Internet of Things. So that is generating data and it's going on the cloud. और cloud पे जा रहा है. ठीक है? तो data Since that also can be called as streaming data. That also can be called as a streaming data. Yes, tell me. and streaming data is unstructured data. Streaming data need not be unstructured actually, to be honest. It can be key value pairs also, but वो बहुत fast आ रहा है. उसको sequential data है. अभी Azure Blobs is used for storing unstructured data plus sequential data. जो data आता ही जा रहा है continuous. तो आप इसमें store कर सकते हो blobs में. ठीक है ना? Sir, one example of Internet of Things, IoT, can that be like Alexa doing things like turning off lights and switching on the music or things like that? Like we say to Alexa, do this, do that. So that also communicates with other things, electronic things, or switch on the AC or TV or something if they're all connected through Bluetooth. So that does also mean Internet of Things. एलेक्सा, हाँ एलेक्सा भी तो है ना, डिवाइस ही है ना वो भी. यस, ऑल थिंग्स आर कम्युनिकेटिंग नाउडेज, सो व्हाट टू डू. हमारी तो बातचीत होती है, ये लोग भी बातचीत करते हैं, क्या करें. गेटिंग? Yes, सो दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है? yes, sir. So the right kind of storage you have to use, right? So when you go to cloud, you have to see which storage is suitable for your purpose. It's all about price, costing. So because Yes. cloud is good at cutting bills. आपने यहाँ पर यूज नहीं किया, वहाँ पर बिल जनरेट हो जाता है. Mhm. सब फिक्स रेट है, एकदम बिल्कुल धाड़ धाड़ धाड़. इट नोज हाउ टू जनरेट बिल. क्लाउड का यही है, एडवांटेज बोलो डिसएडवांटेज बोलो, तुरंत बिल फाड़ के देगा आपको. ओके. तो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट? Yes, रूफी, अंडरस्टैंडिंग रूफी? yes, रूफी है क्या? रूफी है? तो हाँ, बीच में खांसी तो करो या कुछ तो पता चले आप है. नहीं तो फिर आपको कंपलसरी सर वीडियो ऑन सुन रहा करने था मैं. लगूंगा. हाँ, नहीं तो कंपलसरी वीडियो ऑन करना पड़ेगा. अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो वीडियो ऑन करना पड़ेगा. नहीं सर, सुन रहा था मैं सब ध्यान से. हाँ, तो बीच में क्वेश्चन पूछो कुछ तो भी. क्या सारे क्वेश्चन मीनल पूछ लेती है. रूफी के लिए कुछ क्वेश्चन नहीं छोड़ते मीनल आप. sorry, sir. रियान तो सामने सामने पूछ लेता है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज एज्योर डिस्क. So it is used for random access of files as we use on our local storage. ब्लॉब जो है सिक्वेंशियल स्टोरेज के लिए, सिक्वेंशियल स्टोरेज, राइट? बट अगर आपको रैंडमली एक्सेस करना है डेटा, जैसे आपका हार्ड डिस्क है, उसमें रैंडमली आप एक्सेस कर रहे हो ना, कोई भी फाइल्स ओपन कर रहे, स्टोर कर रहे, क्लोज कर रहे, यू डूइंग थिंग्स विद द डेटा रैंडमली. सो if you want that kind of storage, then what you need is a Azure disk. In that case Azure disk की जरूरत है आपको. ठीक है? Sir, Then we have
Yes, bolo. Storage. Sir, see the files are also storing things. Huh? Disk is also, so said Azure files are also storing things, right? Right. Yes. So you said Azure files are storing things. Now Azure disk is also storing things, right? Hmm. Blobs, sorry, Azure blobs are storing things and Azure disk is storing things. So Azure blob is storing things sequentially, like in the Yes, sequence, and correct. disk is storing it in random. रैंडम एक्सेस जैसे आपका हार्ड डिस्क होता है एंड एज्योर फाइल्स इज शेयर नेटवर्क शेयर जैसा दिखेगा आपको जैसे आप नेटवर्क से कोई डेटा एक्सेस करते हो ना वैसा दिखेगा आपको ओके एज्योर डिस्क कब काम में आएगा जैसे आपने कोई वर्चुअल मशीन ली उसमें और एक कोई डिस्क ऐड करना है तो एज्योर डिस्क गॉट इट Then why somebody will want to take Azure disk if we already have Azure blobs? Both are more or less doing the same thing. डिपेंड करता है कोई ग्राफिक एप्लीकेशन रहेगा तो देन यू नीड लिटिल फास्टर एक्सेस सो एज्योर डिस्क विल बी बेटर राइट Okay. इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट latency and all that thing right clear Okay. then we have Azure queues. The next type of storage is Azure queues. ले लो इसको. Snip. 1 minute. Just give me 1 minute. लिया. So 1 minute I'm taking. Yes, sir. Yeah. Azure queues is what like used for uh, workflow kind of applications. The data is exchanged between component application with the help of queues. The output of one application is stored in the queue, which becomes as an input to another application. Allows for asynchronous message queuing between the application. Queue is first in, first out. Now, actually, to understand this, you have to understand this that nowadays when we make applications, now when we are making applications, we are what you say, not making a single big application. Rather, we are breaking into small pieces. So when we make application, we are breaking into small pieces. Okay, छोटे छोटे टुकड़े में छोटे छोटे सर्विस called microservice architectures. You can note down. So we'll come across this microservice architecture. लिखो microservice architecture. So microservice architecture का क्या scene है? So it's very interesting thing. Nowadays we are using this kind of architecture to develop the applications. So instead of writing one big software which does everything, you break that software into small services which are independent of each other, and they will collaborate. They will exchange information. Okay. So one service will do one task, and it will provide the output to another service like that.
So that is how it works. You're getting me? Sir, can you repeat? Microservice architecture means breaking the whole software into small pieces called microservices. Okay. After that, you said something, sir. Yeah, the, each service is independent of each other, right? The services are independent of each other. So each service will do a particular task. So are you getting my point? Instead of having just one single software doing everything, you're breaking the software into small services called microservices. And each service will do its task. Getting me? The output of application is stored in which becomes an input for another application. The output of one application becomes input for other. So it's like a what do you say? एक तरह से ये है क्या कहते हैं इसको जो कंटिन्यूस मोशन में होता है मतलब क्वेश्चन का आंसर आंसर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा नहीं होता जैसे पासपोर्ट आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल जैसे आपका पासपोर्ट ऑफिस है समझो सो पासपोर्ट ऑफिस में you know if you go into passport office what is the job of passport office to give passport but what they've done is they're dividing that work into many small services there are many tables there different tables so first you go to one service they will check your identity so there's a queue over there right and if you finish from there then you have to go to another service maybe they'll take your actually photo they'll check fingerprint if you finish from that then you go to another table there's another service like that so you can see that whole passport function is divided into number of microservices and every service has queue right तो जब आप पासपोर्ट लेने जाते हैं तो ये सीन रहता है वहां पर so it is a perfect example of microservice architecture getting so once you finish from one queue you go to another table another queue is there finish from there go to third one like that this is how it goes getting Yes, sir. समझ में आ गया हेलो Yes, sir. तो वैसे ही सॉफ्टवेयर का है तो क्यू की जरूरत है क्योंकि एवरी सर्विस इज हैविंग नंबर ऑफ कस्टमर्स यू कैन से राइट तो अगर वो सर्विस बिजी है तो क्यू में खड़ा हो जाएगा उसका जो डेटा है वो क्यू में देन वंस द टर्न कम्स इट विल सर्विस एंड अगेन इट विल गो टू अनदर क्यू लाइक दैट अनदर सर्विस उसका क्यू रहेगा सो फॉर दैट वी रिक्वायर एज्योर क्यूज टू मैनेज दोस माइक्रो सर्विसेज उसके लिए क्यू स्टोरेज लगेगा गॉट इट नाउ आई होप इट्स क्लियर नाउ या
Any questions now? Minal, Rufi, No, sir. Rufi, Yes, sir. any questions? No, sir. Till now, no. Okay, then we have Azure tables. The next type of story is Azure tables. So this इसका नाम tables जरूर दिया लेकिन ये की वैल्यू पेयर डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है. उसका नाम सिर्फ tables है, but it's not for tabular data. So it is used to store key value pairs. This is called employee name है क्या? हाँ. Employee name is a key. Zubair is the value. Employee ID is a key. 101 is the value. Salary is the key. Job is the key. Technician like that. Understood? So unstructured data. So not sorry, not an, it's semi-structured data or we can call it as no SQL data. हम उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा बोल सकते हैं या नो एसक्यूएल डेटा बोल सकते हैं, राइट? दोनों में से एक. गेटिंग? Yes. ये हो गया ना. इसमें सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में देखो फ्लेक्सिबिलिटी है. जैसे अभी ई नेम सैलरी जॉब है, यहाँ पर ई नेम्स एम्प्लॉय आईडी सैलरी जॉब, इसमें ईमेल भी डाल दिया मैंने, देखिए. ठीक है ना? तो एक्स्ट्रा फील्ड हम ऐड कर सकते हैं कभी भी. तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर इन द सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. So it has flexibility to add numbers, alphabets, It has anything. flexibility to add more columns easily, मतलब more हाँ, fields easily. अभी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता तो क्या ईमेल का अलग से कॉलम बनाना पड़ता, तो उतना स्टोरेज बाकी रिकॉर्ड्स में जरूरत नहीं रहेगा तो भी डालना पड़ेगा. सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या है, थोड़ा इजी जाता है. yeah. सेमी स्ट्रक्चर्ड में यू कैन जस्ट ऐड एनी नंबर ऑफ फील्ड्स. मुझे अगर व्हीकल नंबर भी ऐड करना किसी एम्प्लॉय के लिए तो यहाँ पर ऐड कर दूंगा. सबके लिए ऐड करना जरूरी नहीं है. सो दैट इज हाउ द सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा वर्क्स. And then the added fields, can they be also removed? Hmm? The added fields, if we don't need it, can that be removed also? या तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना. अगर स्ट्रक्चर्ड डेटा में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना, आपको कॉलम अलग से ऐड कर सबके लिए ऐड हो जाएगा, सबके लिए रिमूव होगा. इफ यू वांट टू ऐड समथिंग सबके लिए ऐड हुआ या सबके लिए रिमूव हुआ, ऐसे इस तरह से. दिस द प्रॉब्लम विद इट. गेटिंग? Yes. Then Azure Archive.
So it is a cost effective storage to archive the data. Means अगर आपको data backup लेके रखना है, archive मतलब some data which we don't need now, we can just store it, archive it. So that is Azure archive storage. So it is a cost effective storage to archive data. इसका फोटो लेना है सर। हाँ लो ना लो, of course. One liner है तो क्या हुआ? कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज। Okay. जी सर। ये हमारे वो जितने भी आर्काइव है मतलब वो ओवरऑल वैसे ही है ना, तो हमारे क्लाउड के आर्काइव के अलावा जो आर्काइव का मीनिंग है वही है ना, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव ही होते हैं आर्काइव। तो ये आर्काइव में डेटा मतलब होता क्या है आर्काइव में? आर्काइव में मतलब सपोज आपका फाइनेंशियल डेटा है, हाँ वो 10 साल का डेटा है, तो आप 10 साल का डेटा थोड़ी ना काम करे, लास्ट का 2-3 साल का आपको कंटिन्यूस में लगता है, बाकी के 7 इयर्स का डेटा यू कैन जस्ट आर्काइव इट, जी जब जरूरत पड़ेगा तो लेंगे। सर, वो हमारा व्हाट्सएप का जो आर्काइव है वो भी इसीलिए ही है। आर्काइव मतलब वो डेटा भी हमको हमेशा लगेगा नहीं, अच्छा, कभी 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 यूज लगा करने तो के फिर लिए। हम निकाल सकते हैं वहां से। अच्छा, हाँ, जो एक्टिव है वो आर्काइव में नहीं रहते हैं, हाँ, लेकिन आर्काइव कभी मतलब जो कभी अभी इतिहास जमा हो गया लेकिन लगता है कभी कभी। कभी कभी लगता है। समटाइम्स यू हैव पॉलिसी लाइक आपको अकाउंटिंग का 15 साल का डेटा तो स्टोर करके रखना ही रखना है, हाँ तो उसको आर्काइव बोलेंगे। हाँ गेटिंग मी? हाँ। तो 15 साल का तो स्टोर करना ही करना है आपको, राइट? सो दैट इज आर्काइव डेटा। समझा? तो इस तरह से होता है। क्लियर? Yes. So that we can call it as archive data. तो उसमें थोड़ा सस्ता रहता है आर्काइव, जो स्टोरेज रहता है इट्स लिटिल cheaper storage. The storage little cheaper. Okay. Sir, the reason of it being cheaper is it because they are not accessed all the time? हाँ, it is not access all the time. Yeah. क्लाउड की अपनी महिमा है, अपना सब चीज है, तो वो अपने को अलग अलग सर्विसेज अलग अलग प्राइस में देता है, बट इट मेक्स योर थिंकिंग एफिशिएंट। आपको जरूरत है तो करो, नहीं तो मत करो। इट्स लाइक दैट, जरूरत के हिसाब से सब चलता है। अदरवाइज आप डेटा पाइल अप करके रखते रहते हैं, राइट? तो आप आर्काइव कर दो, जो आपको डेटा रोज का नहीं लगने वाला उसको यू बाय आर्काइव स्टोरेज एंड पुट इट देयर, तो वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव में दे देगा आपको। ठीक है ना? Yes. क्लियर नाउ? सो दिस वाज ब्रीफ अबाउट द स्टोरेज। तो स्टोरेज में हमने सब देखा ना, एज्योर फाइल्स देखा, देन वी सॉ क्या क्या देखा, एज्योर फाइल्स, देन एज्योर ब्लॉब्स, देन एज्योर डिस्क, देन एज्योर queues, Azure tables, right? And Azure archive. जी सर। Now we go to the next section, databases. So what is there in the database for us? Let's look at that. Okay. So database के लिए क्या है? Let's understand that.
So open source, some databases are open source. So open source means they're like free, like databases रहते हैं ना वैसे. So Azure database for MySQL, PostgreSQL, ये आप ले सकते हो. So in Azure we can connect to these services, MySQL, PostgreSQL. So this will be very very cheap. Okay. So it will allow you to create those databases. Okay. इसका लाइसेंस फी नहीं होता है ना, खाली जो भी थोड़ा बहुत जो चार्ज करेगा जो करेगा ऐसे. So for smaller requirements we can use MySQL, we can use PostgreSQL. ये हम यूज कर सकते हैं for lesser requirements, smaller requirements. We can use this. Okay. But so these MySQL and all, they are still charged, but at a very small price. Yes, yes. अभी SQL का चार्ज ज्यादा रहेगा, Microsoft SQL, because the license comes into picture and all that thing, and it's for commercial use. For very small use, ये MySQL, PostgreSQL will work. जैसे वेबसाइट का डेटा हो, तो we don't need a very very big database. ऐसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए चलेगा. Getting me? Yes, sir. So, So the SQL that we learned from you, sorry? which we down with the SQL that we learned from you, हाँ. we downloaded it on our computers, and that was free of cost. So was that MySQL? नो, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल भी दो वर्जन आते हैं. एक आता है कि एक्सप्रेस एडिशन, आपने एक्सप्रेस एडिशन किया ना, वो लर्निंग पर्पस के लिए, Yes, उसमें sir. स्टोरेज का लिमिट है. जो एक्सप्रेस एडिशन हम यूज करते हैं ना, 2 GB जैसे ज्यादा डेटा स्टोर होगा उसमें, उससे ज्यादा नहीं होगा. दैट इज गुड इनफ फॉर आवर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, लर्निंग के लिए ठीक है. अभी सर वो जो पढ़ा रहे हैं वो एसक्यूएल जो है ना, वो एसक्यूएल और माइस्क्यूएल तो अलग है. माई दे आर डिफरेंट वेंडर्स. जो हम आपको सिखा रहे MS SQL, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल. माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है. एंड तो जो सर ये माई एसक्यूएल है तो वो सॉफ्ट टूल्स कंप्यूटर्स इज टीचिंग यू माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल. माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल. हम जो सिखाते माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सिखाते हैं. और माई भी है, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, दीज आर ओपन सोर्स. वो उनका खुद का है. कौन सा? माई एसक्यूएल उनकी खुद की कंपनी का है. ओपन सोर्स. ओपन सोर्स मतलब ओपन पब्लिक, पब्लिक पब्लिक, हाँ. उसका कोई माँ बाप नहीं. मतलब कोई कम्युनिटी है जो ये उसको देखती है. क्रिएट किया है हाँ, खुद के लिए, उसके लिए, हाँ. खुद की सेवा खुद करो, उसके लिए वो. माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है. जी जी. बट ऑफ कोर्स वो सबसे वो ज्यादा बेटर रहेगा, बट इट्स फॉर बिगर एप्लीकेशंस, फॉर ज्यादा ट्रांजैक्शन लोड रहेगा, उसके हिसाब से रहेगा वो. समझे ना? दैट इज हाउ इट वर्क्स. क्लियर? देन ये समझा आपको? हेलो? ओपन सोर्स मींस लिटिल, इट्स लाइक अ फ्री बी. क्लियर रूफी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रूफी का आवाज आता तो अच्छा लगता है ना, इसलिए बोलता है बीच में. देन वी हैव Azure SQL database. इट इज प्लेटफॉर्म एज सर्विस फॉर एसक्यूएल सर्वर. अभी हम एसक्यूएल सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं, उसका पैचेस मेंटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वी आल्सो हैव दिस वर्जन व्हिच इज Azure SQL database. सो इट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस फॉर एसक्यूएल सर्वर. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस So फॉर can you एसक्यूएल just सर्वर. take back to the previous slide a minute? यस मैडम, Thank you, एट योर sir. सर्विस. Yes, sir. हो गया? डन? Yes, sir. Done. इसका नहीं है. Yes, sir. Done. So this is Azure SQL database. So it is platform as a service for SQL server. Yes, sir. Right? Yes sir. Sir, I have also worked on SaaS.
हाँ for Azure. I have what worked on SaaS also, sir, for Azure. you gone for SaaS, SaaS, SaaS software. Yes, software as a service. yes. So this platform as a service that means कोई physical server नहीं दिखेगा आपको connection string देंगे आप connect करेंगे it will work like a SQL database everything will be there right so आपको कोई physical server manage नहीं करना है तो backend में सब manage हो जाएगा so there is platform as a service right then so we have something called as Azure database migration service Azure database migration service so it is managed service which allows you to migrate on-premises databases to the Azure cloud platform with minimum downtime. So we can migrate to the cloud with minimum downtime. So it's a managed service which allows to migrate on-premises databases to the Azure cloud platform with minimum downtime. And so usually these work are done off business hours. आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं एकदम ऐसे स्लीपी मोड में बात कर रहे हैं आप ऐसा लग रहा है हाँ पता नहीं बोलो सर, लैपटॉप में मतलब ये नेटवर्क में थोड़ा लैग है शायद. हाँ नहीं तो आपकी आवाज बहुत क्लियर आती है एकदम बिल्कुल यस सर, ये नेटवर्क लता स्लो होगा. मंगेशकर जैसे आती है अभी आज क्या वो पुराने जमाने की थी ना सिंगर कोई उसके से आ रहा है हाँ बोलो सर, बोलो so I was saying that this migration work, this is mostly done off business hours. मतलब business hours में तो करते भी नहीं है वैसे भी, तो डाउन टाइम भी कम ही होता है. हाँ वो उनका इशू है बट माइग्रेशन करना पड़ता है ना अगर कोई सोचा है उनका डेटाबेस सब ऑन प्रीमाइसेस है नाउ दे वांट टू मूव ऑन टू क्लाउड सो वी नीड टू माइग्रेट टू द क्लाउड उसके लिए देन वी हैव दिस माइग्रेशन सर्विसेज ओके Yes. So, little off topic. सो माइग्रेशन सर्विसेज से थोड़ा इजी जाएगा इट विल बिकम लिटिल इजियर माइग्रेशन सर्विस से वो जो है ना माइग्रेशन प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा दैट इज द थिंग हाँ बोलो ऑफ टॉपिक क्या पूछना चाहते बोलो So this is on-premise to Azure cloud, and within Azure cloud also migration हो सकता है. क्या व्हाट Can migration be done within Azure cloud also, like cloud to cloud? क्लाउड टू क्लाउड मतलब AWS से Azure में करना तो मोस्टली माइग्रेशन इज फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस टू द क्लाउड या फ्रॉम वन क्लाउड प्रोवाइडर टू अनदर क्लाउड प्रोवाइडर वो माइग्रेशन हो सकता है ठीक है ना Okay. Okay. एक देश से दूसरे देश में जाएगा तो उसको माइग्रेशन बोलेंगे ना Yes, sir. माइग्रेशन एंड माइग्रेन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स ओके ओके Yes. देन नेक्स्ट Azure Cosmos DB. So it's a distributed database. The data is distributed across several regions, allowing distributed processing. Distributed database मतलब क्या होता है अभी again we have nowadays you know we want to write applications which will work across the world right कहीं भी चलना चाहिए अभी आपका डेटाबेस सर्वर सपोजिंग पुणे में है और आप यूएस से एक्सेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इट विल बिकम स्लो राइट
You may have office in UK, you may have in US, you may have in other countries, right? Yes. So it is going to slow down. But distributed database से क्या होगा कि it will be like the task will be divided. A mirror copies will be there. So the distributed database is an architecture which allows you to access database, work on the application from various locations. अलग-अलग location से it will help you to access, do things. Okay, so that is distributed database. So the data is distributed across several regions, allowing distributed processing. Got it? Okay. Done? Yes. Then Azure Marketplace. So we can search for a service offering on the Azure Marketplace. Azure Marketplace वहाँ पर अभी हम जब Azure पे जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं कोई भी सर्विस के लिए. That is Azure Marketplace. It allows you to search for things like this. Okay, clear? Sir, about when you were telling us about Azure Cosmos DB, Hmm. is it the same thing which was Azure region, like available zone 1, zone 2, zone 3? That is a physical thing, Okay, okay, okay. but this is about the database we are talking. If you take a database like that, so automatic it helps you to scale up, scale anywhere like that database. उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एक अपना एक आर्किटेक्चर होता है. We want our application to run from anywhere, right? कोई अपने application लिखा and that application should run from anywhere seamlessly, right? And Yes, requires the database to store the data also. तो कोई commercial application लिखा तो obviously अगर website है तो that's a different thing, but application, when we talk of application, there can be huge amount of data, right, involved there. yes, yes, So there you need distributed processing. So Cosmos DB makes your journey easy. So cloud is just enabling. Cloud is giving you a lot of facilities by which you can really write applications of your choice, of your dream. Your dream can come true with the help of cloud. So जब हम cloud use करते हैं तो it's a dream come true, actually speaking. Getting? yes, sir. Clear now? Yes. Yeah, so this is how it works. So any questions you want to ask? We covered a lot of topics today. So we saw about the networking products, we saw about the Marketplace, storage products, yes, sir. then we saw about the Cloud services, compute services, database services,
Okay, so thank you Azure guys. disk is a physical disk, like on the on-premise we use it, or this is also on cloud. क्लाउड पे ही है ना सब, सारी चीज क्लाउड पे ही है सब, वर्चुअलाइजेशन ही है, वर्चुअलाइज्ड ही सब कुछ, एवरीथिंग इज वर्चुअलाइज्ड, एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड. ओके, Yes. चलो, so you're done with it, right? Yes. So thank you so much for connecting with me today. I'll see you next class. Bye bye. Yes, sir. Please save the recording, sir, and we'll see it on YouTube. Yeah, yeah, sure, sure. Thank you.